नमस्कार फ्रेंड्स, आई देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से। दोस्तों आज रोज दोस्तों हम स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम चैप्टर है हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उसका वीडियो नंबर 5 लेके उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों, कि जिसमें Today we are going to discuss about the chemical reactions of alcohol and phenol. उसका पार्ट 1 यानी कि अल्कोहल एंड फिनॉल की जो केमिकल रिएक्शन है दोस्तों, ठीक है, उनका पार्ट 1 लेके उपस्थित हुआ हूँ। टोटल वीडियो नंबर 5 है हमारा ये, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये जर्नी। क्लास 12 इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उपनिषद साइंस एकेडमी राजकोट एंड लिमखेड़ा. We have 2 different branches. From there, I, Devang Prajapati, MSc B.Ed. From last 8 years, I am teaching the chemistry subject. So let us begin the journey of chemical reactions of alcohol and phenol. Now first of all, chemical reactions. Now before starting this video, I would like to say that the students who are new, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the latest notification of our videos. So let's start the journey of chemical reaction for alcohol and phenol. Alcohols are versatile nature. Okay. Now, on the basis of which criteria we can say that the alcohol is having the versatile nature? So the versatile means it possesses 2 different types of nature. Okay. Now how we can say that the alcohol is the versatile compound? Number 1, they react both as nucleophiles and electrophiles, means it can interact with the both. With the nucleophile also, it can act as an electrophile also. Okay. Now what does it mean by nucleophile and electrophile? So nucleophile matlab who donates electron pair, whereas electrophile matlab gain electron pairs. So those who donate electron pair, they are known as nucleophiles, and those who gain electron pairs, they are considered to be the electrophiles. Now first one, when alcohol react as a nucleophiles, the bond between OH, the bond between OH is broken when alcohols react as nucleophile. अल्कोहल जब न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करता है तब वो O and H के बीच में ब्रेक डाउन करवाता है. ओके, सो नाउ लेट अस सी alcohols as nucleophiles. So in that ROH, that is alcohol, it can interact with carbocation directly. This O with the lone pair of electron, it is going to attack on the carbon atom. यहाँ पे वो अटैक करेगा, ओके, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, and then it is going to give us the product that is RO plus H, that is NC, as an intermediate compound, and then at the last it can give us ROC plus proton ion. Okay, so this is what when the alcohol act as a nucleophile. Okay, जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है तब की बात है ये दोस्तों. ओके, नाउ अभी शुरुआत में ही हमने बोला सपोज इफ अल्कोहल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये वाली रिएक्शन हो रही है. ओके, नाउ कुछ बच्चों को क्वेश्चन होगा कि सपोज सर आपने बोला कि अल्कोहल इज द वर्सेटाइल नेचर, तो अभी न्यूक्लियोफाइल का काम हो गया है. नाउ
अगर अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल के जैसे काम करे तो क्या? तो चिंता मत करिए दोस्तों, उसका भी आंसर है हमारे पास. सो लेट अस सी दैट व्हेन अल्कोहल रिएक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स, protonated alcohol react in this manner and then it is going to break CO bond. वो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन करेगा जब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है तब. नाउ वो दौरान का रिएक्शन कौन सा हो रहा है? लेट अस सी दैट प्रोटोनेटेड अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल आर CH2OH plus H plus it give us R CH2OH2 plus. It is going to give us the protonated alcohol. Okay, ये जो बना है दोस्तों, that is called as an protonated alcohol. Now take this protonated alcohol, interact with Br minus as an electrophile, वो react करेगा and then it is going to produce, that is BrCH2R, or you can also call it RCH2Br, that is alkyl halide, and water will be liberated. Okay, so this is what when the alcohol react as or alcohol act as an electrophile. मतलब कि हमारा जो अल्कोहल है वो वर्सेटाइल नेचर कैसे कहलाता है? नंबर 1, इट कैन इंटरैक्ट विद दी, एक नंबर वो इंटरैक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल के जैसे, ठीक है. दूसरा, इट कैन इंटरैक्ट विद दी इलेक्ट्रोफाइल ऑल्सो, मतलब कि उसका नेचर दोनों तरह का होता है, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल. दैट इज वाई अल्कोहल वी आर कंसिडरिंग एज एन वर्सेटाइल नेचर. ओके, दैट्स ऑल. नाउ नेक्स्ट, first, based on the cleavage of OH bond, OH के बीच में जो क्लीवेज हो रहा है वो, and cleavage between CO bonds, the reactions of alcohol and phenols may be divided into two groups. उसको दो ग्रुप के अंदर डिवाइडेड किया गया है. नंबर 1, that is breakdown or cleavage of OH bonds, and number 2, that is cleavage of CO bond. So first we are going to see about when the cleavage is between the OH bond. So let us see that. सबसे पहले reaction involving cleavage of OH bond. OH bond में अगर cleavage हो तो वो देखेंगे हम. So in that first reaction is acidity of alcohol and phenols. Okay, so let us see that. Alcohol and phenol react with active metals such as, कौन से active metal? Sodium, potassium and aluminum to yield corresponding alkoxide if you have taken the alcohol. Then suppose, for example, if you have taken instead of alcohol you have taken the phenol, तो आपको प्रोडक्ट में फिनॉक्साइड मिलने वाला है. ओके, एंड हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट हो जाएगा दोस्तों. सो लेट अस सी दैट रिएक्शन ऑफ विथ मेटल्स. उसमें अल्कोहल ले लिया हमने, ये रहा हमारा अल्कोहल, इंटरैक्ट विथ सोडियम मेटल विच इज क्वाइट रिएक्टिव. इट इज गोइंग टू गिव अस सोडियम अल्कोक्साइड. क्या देगा वो? सोडियम अल्कोक्साइड. और हमारा हाइड्रोजन तो है ही साथ में लिबरेट होने वाला. ओके, अभी मैंने बोला सपोज इफ यू टेकन अल्कोहल तो आपको अल्कोक्साइड मिलेगा. तो देखो हमने अल्कोहल लिया विथ सोडियम मेटल, देन सोडियम अल्कोक्साइड मिल रहा है. ओके, देन नेक्स्ट, सपोज इफ यू टेकन टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल. क्या लिया है हमने? 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल. अभी ये 3 डिग्री कैसे हुआ? देखो दोस्तों,
OH जो कार्बन के साथ अटैच है वो 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन के साथ अटैच है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज एन टर्शरी. And then 1, 2, 3 and 4 carbons are there. So methane, ethane, propane, butane. So it is butyl and then alcohol. So when tertiary butyl alcohol, it can interact with the aluminum metal, which is also an example of the reactive metal. Then it is going to give us as a product aluminium tertiary butoxide. What it is going to give? Aluminium tertiary means 3 degree butoxide plus will be getting hydrogen. ओके यहाँ पे बैलेंसिंग कर लेना है आपको. 3H2 है. ओके so this is what when tertiary butyl alcohol it can interact with the active metal like aluminum, then you will be getting aluminum tertiary butoxide plus liberation of the hydrogen gas. So this is what for reaction with the metals for alcohol. Now what about phenol? So let us see for the phenol also. Yes, we are waiting for the phenol. Phenol आ रहा है, रास्ते में, on the way. Yes, great. So phenol, it can interact with the active metal like sodium. Will be getting in a product the sodium phenoxide. क्या product मिलेगा? Will be getting sodium phenoxide plus liberation of dihydrogen gas. Okay, so this is what reaction of metal in case of phenol. Okay, now in addition to this, इसमें एक्स्ट्रा बात करें हम, in addition to this phenol react with aqueous sodium hydroxide, NaOH के साथ interact करेगा. Okay, even though it can give us the sodium phenoxide, क्या देगा? सोडियम फिनोक्साइड. वही का वही अभी हमारी बात हुई. क्या देगा वो? सोडियम phenoxide plus liberation of water molecule. Okay, now the above reaction show that alcohols and phenols are which kind of nature? Make it underline in your book. Acidic in nature. Okay, in fact alcohols and phenols are Bronsted acid, that is they can donate proton to a stronger base. Let us see that also. So first we'll take the base. It can interact with the acid and it can give us the conjugate acid and conjugate base. Okay, हमें क्या मिलेगा? conjugated acid plus conjugated base. Okay, so that's all for reaction with metals. Okay, now the second reaction we are going to see, that is the acidity of alcohols. In that the acidic character of alcohol किसकी वजह से होता है दोस्तों? तो that is because of the polar nature of OH bond. OH bond जो hydroxy group is having the polar bond. Okay, then an electron releasing group, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पे हमने लिए हुए हैं. ठीक है, एक है मिथाइल एंड सेकेंड इज इथाइल. increases electron density on oxygen tending to decrease the polarity of OH bond. मतलब कि जितने ज़्यादा
नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे ओके उतनी पोलैरिटी जो है वो कम होती जाएगी ओके उनकी रिएक्टिविटी जो है वो भी कम होती जाएगी ओके सो दिस डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी वजह से मैंने अभी आपको बोला कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे ओके फॉर दिस रीजन द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेज विद द फॉलोइंग ऑर्डर सो हाईएस्ट स्ट्रेंथ किसकी होगी ये है हाईएस्ट स्ट्रेंथ वाला ये देखो अल्कोहल जो कार्बन के साथ जुड़ा है इट इज अटैच विद द 1R सो इट इज द प्राइमरी 1 डिग्री उनकी हाईएस्ट है उसके बाद उससे थोड़ी कम वो आ जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल जो कार्बन के साथ अटैच है वो R 1R और 2R के साथ अटैच है तो ये 2 डिग्री ओके उससे कम 3 डिग्री की होगी okay so you can write it in this manner primary is having the highest then secondary uske baad you will be having the tertiary so try to remember for MCQ the acidic strength of an alcohol is in this manner primary is highest then secondary and then tertiary okay so this is what the order okay so try to remember for MCQ now in case of acidity of alcohol and phenol with reaction for acidity of alcohol in that only alcohols are however weaker acids than water okay here it has been written in Gujarati but no problem I'll translate for you alcohols are however weaker acids than water so you in simple one line you can write it the H2O is having more acidity as compared to the alcohol okay and alcohol is weak acid as compared to the water okay this can illustrated by the reaction of water with an alkoxide so let us see that this is the base we have taken base can interact with the acid then it is going to give us the conjugated acid plus conjugated base okay I'm sorry for this it is written in Gujarati but then I have translated for you in English so alcohol are however weaker acid than the water so you can say that in one line the reactivity of water acidic strength of water is quite more as compared to the alcohol okay and that can be explained by taking the reaction of base with the acid okay and you'll be getting the conjugated acid and conjugated base okay now this reaction shows that water is better proton donor okay so that is stronger acid than the alcohol so that is what I have written H2O greater as compared to the alcohol okay also in above reaction we note that the alkoxide ion is a better proton acceptor than the hydroxide ion which suggests that the alkoxides are stronger bases okay so this can be asked in form of the reason scientific reason okay then alcohol act as a Bronsted bases as well it is due to the presence of unsaid electron pair which are present on the oxygen which makes them the proton acceptor okay so that's all we'll be keeping till here
Okay, if any doubts are there, then you can comment it in the comment section. Okay, now what we have done today, we have just done the chemical reactions of alcohol and phenol, in which the part 1 only reaction involving the cleavage of OH bond, still we are in that. Okay, in that also we have just finished the reaction of metals, then for of alcohol and phenol both, then acidity of alcohol we have done it. Now in next session we are going to continue from the acidity of phenols. Okay, that's all. Thank you.